Hello students, today we are going to discuss about the new chapter which is Trigonometry, and it occurs total 6 marks in our board examination. And now without wasting time, let's proceed on the important questions of the chapter number 7, which are based on the trigonometric identities. So first of all, I want to remember you again. These trigonometric basic identities were: first is sine square theta plus cos square theta is equals to 1. Second is 1 plus tan square theta is equals to sec square theta. And third, this is last, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta. Okay, then let's proceed question to question, which are important according to me. So first, this is the example 6 of exercise 7.1. First is prove that sin theta upon 1 plus cos theta plus 1 plus cos theta upon sin theta is equals to 2 sec theta. The given question is this, and we have to 2 sec theta. So select LHS. LHS is equals to sin theta upon 1 plus cos theta and 1 plus cos theta upon sin theta. Take the LCM. LCM is sin theta into 1 plus cos theta, and these will multiply with each other, sin square theta, and these will both multiply by with each other. Clear? Now open this bracket. Sin square theta plus 1 plus cos square theta plus 2 cos theta upon sin theta 1 plus cos theta. Sin square theta plus cos square theta is 1, and 1 is from here, then 2 cos theta upon sin theta 1 plus cos theta. Sorry, 2 is common from the numerator, take it out. 1 plus cos theta is the remaining value. It was sin theta, and it is 1 plus cos theta. You can see with 2 upon sin theta, इसका मतलब हो गया 2 cosec थीटा. हमको क्या करना था? 2 sec थीटा. नहीं सॉरी, 2 cosec थीटा है. Okay, friend. Now next question. Sin theta minus 2 sin cube theta. It is the example number 7 of 7.1. इसके लिए प्रूव क्या करना है, वो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. इवैल्यूएशन. sin theta is common, 1 minus
2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन थीटा कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एंड नेक्स्ट cos थीटा इज कॉमन फ्रॉम हियर, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ गई ना? नाउ साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज tan थीटा। 1 का मतलब हो गया साइन cos के फॉर्मेशन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर। एक्चुअली होगा तो ये भी बाहर माइनस का सिंबल है तो ये सभी माइनस हो जाएंगे। tan थीटा साइन cos स्क्वायर थीटा को पहले लिख देता हूं एंड माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो गया, या cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो गए। कैंसिल, रिजल्ट इज tan थीटा। समझ में आई बात? आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, 1 minus 2 sin square theta, and this is the example 9th of 7.1. Example 9th of 7.1. So what is the basic process? Select LHS. तो बार बार नहीं लिखूंगा, मैं सीधा चल रहा हूं। LHS लिखा, अब इसको सिंप्लीफाई करता हूं, आंसर ही आ जाएगा। अब या फिर लिख देता हूं, चलो cos to the power 4 theta minus sin to the power 4 theta. For this we can say that cos square theta to the power 2 minus sin square theta to the power 2. बात समझ में आई? a square minus b square, a square minus b square, then a plus b into a minus b. A is cos square theta and b is sin square theta. A square minus b square, a plus b and a minus b. This became 1. 1 multiplied by this, same. Only this is remaining. cos स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या आ गया? 1 माइनस 2 cos स्क्वायर, ये आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Example 10. Of 7.1, which is P is equals to sin theta plus cos theta. And Q is equals to sec theta plus cosec theta. Sorry, sec theta. Then prove that Q into P square minus 1 is equals to 2. It's given, this is also given, and it's for prove, to prove. So let's start. Basically
P is in the form of sin and cos, but Q is in form of sec and cosec. So first of all, I am solving this 1 upon cos theta and 1 upon sin theta. Now take the LCM sin theta into cos theta. ये हो गया आपके पास sin theta plus cos theta. Now apply the value in left hand side. Select LHS. Q is this. Sin theta plus cos theta into upon sin theta into cos theta. P square P is sin theta plus cos theta. Sin theta plus cos theta whole square minus 1. समझ में आई? सही. ये LHS हुआ. Now open this bracket. Sin square theta plus cos square theta 2 sin theta cos theta minus 1 upon into sin theta plus cos theta upon sin theta cos theta. Sin theta cos theta ये सेम, denominator is same. It is 1 minus 1, so plus 1 minus 1 cancel. क्या बचा? 2 sin theta cos theta cancel by each other. सिर्फ बचा क्या? 2 into sin theta plus cos theta, which is equals to, this is the value of P from here. So 2P is equals to RHS. Hence proof. Okay, that's friends. Now the next question. Question number 6 of exercise 7.1. 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta, which have equal to sec theta minus tan theta. हमें इसको प्रूव करना है, ये आना चाहिए. ऐसे केस में in this type of the case, first of all select LHS, which is 1 minus sin theta upon 1 plus sin. कभी भी ऐसा फॉर्मेशन आ जाए तो आप क्या करें, इसी का रेशनलाइजेशन करते हैं रूट डेनोमिनेटर का. तो 1 minus sin theta upon 1 minus sin. The rationalization of the denominator means we will change the symbol, middle symbol of the denominator, and after it we will multiply it with the numerator and denominator. Now 1 minus sin theta whole square, and I am separating the under root also. It is 1 minus sin square theta because a plus b, a minus b. It will cancel with this. Next step, 1 minus sin theta is remaining only, and in the denominator it is cos square theta, then under root cos square theta. Next, 1 minus sin theta upon cos theta. Now separate the denominator, cos theta minus sin theta upon cos theta. 1 upon cos theta is sec theta. Sin theta upon cos theta is tan theta. So it is equals to RHS. Answer proved. Now the next question.
sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta. Question number 12 of exercise 7.1. Sin to the power 4 theta plus cos to the power 4 theta is equals to 1 minus 2 sin square theta cos square theta. देखो सेलेक्ट LHS प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 cos स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 टू क्रिएट एन आइडेंटिटी। हम आइडेंटिटी बनाएंगे क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2ab1, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिससे a प्लस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी बन जाएगी। अब प्लस 2ab किया तो माइनस 2ab करना पड़ेगा। तो ये तो ऐसे लिखा था समझाने के लिए। अब मैं लिख रहा हूं ऑन adding and subtracting 2 sin square theta cos square theta, क्योंकि अपने a का मतलब sin square theta and b means cos square theta. The step will become sin square theta to the power 2 cos square theta to the power 2 plus 2 sin square theta cos square theta minus 2 sin square theta cos square theta. अब देखो माइनस का रिजल्ट ये में, तो इसको डिस्टर्ब मत करो, यहां से लेके यहां तक आइडेंटिटी बन जाएगी। It is equals to sin theta sin square theta plus cos square theta to the power 2 a plus b whole square minus 2 sin square theta cos square theta. It is equals to 1 square is 1 minus 2 sin square theta cos square theta, which is equals to RHS. Hence proved. Okay, student, please pause it and note it down. Now the next question. Next question is question number 21 of exercise 7.1. Sin A plus cosec A. Sin A cosec A whole square plus cos A plus sec A whole square is equals to, हमें प्रूव करना है 7 plus tan square A plus cot square। ये इसके लिए प्रूव करना है। ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, पहला काम तो यही होता है। Select LHS, then if the possible then open the brackets. So sin square A plus cosec square A plus cos square A plus 2 sin A cosec A plus cos square A plus sec square A plus 2 cos A sec A. I use here identity of a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. देखो sin a cosec a both are reciprocal of each other, so we'll cancel and give as a quotient of 1. So 2 into 1 is 2. Similarly, these both will cancel. 2 to 4. Sin square a plus cos square a 5 is 1, then 5. तो 1 यहां से इसको मिला के 1 हुआ, 2 यहां से तो 1 and 2 3 to 5 cosec square
plus 1 is remaining this. Sec square a. Now change this 5 1 plus cot square a and 1 plus tan square a. 5 6 7 आंसर प्रूव। जो हमें ये प्रूव, अब इसमें कुछ लैंग्वेज भी है। आपको जो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पे यूज की है वो आपको शो भी करनी होगी। कुछ बेसिक आइडेंटिटी जैसे यहाँ पे मैंने ए प्लस बी होल स्क्वायर यूज किया है तो वो भी शो नहीं, वो अपन क्लासरूम में कर चुके हैं ऑलरेडी। तो ये अपन एक इंट्रोडक्शन सॉरी रिवीजन पार्ट चल रहा है, तो इसमें सभी चीजें वापस लिखना कंपल्सरी नहीं हो पाएगा या पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, वरना बहुत लंबा हो जाएगा सिलेबस, क्योंकि वैसे एग्जाम भी आपकी होनी है और मेथड जो है प्रॉपर वो आप अपनी नोटबुक से जस्ट वहां से वॉच करेंगे। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हो रहा है। बेसिकली सब बातें नोट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ बातें रह जाती है तो आप अपनी नोटबुक से उनको नोट करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज one question is left by me, which is question number 16. I think 15 or 16. Let's suppose it is the question number 16 of the exercise 7.1. It is given that sine to the power 6 theta plus cos to the power 6 theta is equals to 1 minus 3 sine square theta cos square theta. Just prove this one only. हमें ये प्रूव करना है कि इसके इक्वल है। जब ऐसा सीन आए ना, प्राइम फैक्टर करें यहाँ, जैसे 6 है, 6 आए तो हमें इसको 2 टू द पावर 3 में लेना। फॉर एग्जाम्पल साइन टू द पावर 2 थीटा टू द पावर 3 cos टू द पावर 2 टू थीटा टू द पावर, क्योंकि क्या होगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है ए प्लस बी एंड ए इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी इज कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा विल गिव 1। आइडेंटिटी क्या होगी, मैं ये तो लिख देता हूं यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसका अगेंस्ट ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होती है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ध्यान रखना प्लस माइनस में बड़ी मिस्टेक होती है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कोस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा टू द पावर 2 ए स्क्वायर माइनस ए बी साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी इज कोस स्क्वायर थीटा टू द पावर 2। समझ में आई होगी आपके पास, ये होगा। अब देखो, अब थोड़ा सा जो हमें प्रूव करना है उसके ऊपर भी पॉइंट आउट करते हैं। आपके पास माइनस साइन स्क्वायर 3 चाहिए अपने को, 1 है अपने पास, तो इसमें मैं कर रहा हूं, काम कर रहा हूं, लिख देंगे अपन ये नीचे की लैंग्वेज में माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा ऑन एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा फ्रॉम दिस। तो ये माइनस कर दिया और प्लस में भी कर लेते हैं, और ये आगे लिख दूं थोड़ा सा ऐसे 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, देखो ए स्क्वायर ए ये माने तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ये 1 हुआ ए प्लस बी होल स्क्वायर, किससे इससे 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 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाइड विथ 1 क्या से यहां से इसको इससे करेंगे, ये हो गया 1 स्क्वायर इज 1 then 1 minus 3 sin square theta cos square. Okay students, now next question start.
And the given question is question number 30 of exercise 7.1. M is equals to cos A upon cos B and M is equals to cos A upon sin B. Then prove that m square plus n square into cos square B is equals to n square. पहला काम हमें क्या चाहिए? LHS सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से LHS which is m square plus n square into cos B. Sorry, cos square B. m square means cos square B, cos square A upon cos square B plus cos square A upon sin square B and is cos square B. Clear? And now LCM is, देखो ये काम कर रहा हूँ, चलो ठीक है, LCM sin square B cos square B both will multiply sin square B cos square A plus these both multiply cos square A cos square B. मल्टीप्लाई क्यों? क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली कहने का मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे into cos square B. Cos square B cancel by this and from here look here, cos square A is common, cos square A, so take it out. What is the remaining? Sin square B plus cos square B, sin square B plus cos square B upon sin square B. It is 1 sin square theta plus cos square theta. Then only this value is remaining, cos square A upon sin square B. And इसको अपन लिख सकते हैं ऐसे cos A upon sin B whole square, और इसका मतलब है n square is equals to RHS. Hence 2. So students, finally we have completed the important questions of the exercise 7.1 and now one or two or three questions are important in the next exercise, so I am going to proceed these important question of the exercise 7.2. So let's start from the first important question, which is only two questions are important. I marked here only two questions, and the first question is find value of theta if. This is the question 15 of exercise 7.2. Sin 3 theta is equals to cos theta minus 60, where 3 theta and theta minus 6 degree are acute angles. हमें ये पता है sin theta is equals to cos 90 minus theta होता है. क्लियर है? तो इसके लिए लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पहले कोस हटाना पड़ेगा, तो ये लिखा अपन ने cos 90 minus 3 theta is equals to cos theta minus 6. cos से cos रिमूव हुआ, 90 minus 3 theta is equals to theta minus 6. ट्रांसपोज कर लो, minus 3 theta minus 6 and minus 90. minus 4 theta is equals to minus 96, minus cancel by minus, and theta is equals to 24. बात समझ में आ गई होगी, सिंपल सा मैटर है. अब इसको समझने की कोशिश करना और बचेगा पार्ट a by 2. देखो a, b and c according to the question A, B, C are
interior angles of a triangle। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, या फिर ब्रीफली इसमें जो ले रखा है वो एबीसी से डिनोट किया हुआ है, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180, because sum of the whole interior angle of a triangle is always equals to 180 degree. Now we will keep both values here and transpose A in the RHS. B plus C is equals to 180 minus A. Now what we need? We need upon 2. So divide it by 2. It will become 90 minus A by 2 लगेगा तो 290 A by 2. Now apply tan in both sides. ये लिखेंगे लैंग्वेज में आप tan B plus C upon 2 is equals to tan 90 minus A by, it remains same, and tan 90 minus theta is equal to theta. Okay students, finally we have completed the whole of the chapter, and you will practice on this chapter again, because one question of the 6 marks will be carried this chapter by this chapter, and 1 marks from the exercise 7.2 and total 6 marks from the exercise 7.1. So it is a very important part of the chapter.